eating leads to stress, eating more or eating less, or eating like eating disproportionately, how does that lead to stress? Okay, so there are two things here. Stress can lead to more eating. So Okay. people do, Okay. Yeah. yeah, yeah. तो आप जब stressed होते हो, आप moody होते हो, बचपन से हमने ये एक चीज हमारे दिमाग में होती है कि जब छोटे होते थे हम लोग, when we were toddlers, when we were babies, तो रोते थे तो हमें फौरन मिल जाता था खाने को, and basically we were comforted by food. We Yep. were, हाँ, तो and especially when the breast milk is fatty, it's very milky and yummy. That's why when we're stressed, we seek out those same type of foods जिसमें high fat content होता है, जिसमें Oh, वही interesting. same feeling of comfort आती है, क्योंकि it takes us back to when we were babies, and जब our moms fed us, it was like warmth, it was like love, it was like connection, it was so many things. All our emotional needs were getting met as well as our physical needs. So sometimes हम लोग अपनी emotional needs को physically meet करने में लगे रहते हैं. What the fight Interesting. doesn't work out um, because we're not babies anymore. Yep. And yeah, so we start craving. उन लम्हों में जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो या बोर्ड होते हैं, तो हमारा हम लोग ऐसी सॉल्टी और हाई फैटी चीजें हम सीक आउट करते हैं, क्योंकि उसमें ना तो सिर्फ हमें कंफर्ट मिलता है, बट people who overeat, एक तरीके से they're numbing out their feelings as well. It Right. helps them numb out. वही push away, क्योंकि it's too painful. We can't deal with this. So that's where a lot of overeating comes from. And there's हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा overeating है कि मैं बता नहीं सकती. Everything is about food. पूरी दुनिया में everything is about food, लेकिन it surprises me how much we make things about food here. आप किसी के घर चले जाओ, it's all about food. Yep. Nobody wants to sit down and actually connect So emotionally, heart to heart. They connect through food. perfect. So, which is Yeah, bad, it which is is not very bad. important. Yeah. One little question here. I read somewhere that there's this, you said stress leads to eating, right? So I'm reminded of this article which said there's this hormone that's released when you're stressed, some cortisol or something, if I'm Yeah, spelling it right. Yeah. cortisol and adrenaline. Yeah, actually, I wanted to talk about this. This is a good point that you brought up. I'm glad. क्योंकि Thank you. ये Thank जो you. हमारे glands होते हैं ना, Yeah. जहाँ से stress hormones release होते हैं, ये हमारी kidney के ऊपर होते हैं, ठीक है? Okay. और जब हम लोग ये रोज एक्टिवेट होता है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताऊंगी क्रॉनिक स्ट्रेस में और अक्यूट स्ट्रेस में, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी होता है ना. Yeah. तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो बार बार आ रहा होता है, बार बार हो रहा होता है, या बहुत पुराना एक अंदर बैठा हुआ होता है स्ट्रेस, वो Yep. ट्रिगर हो रहा होता है बार बार, वो उससे ना हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है ना फटीग हो जाता है, मतलब Okay. टायर्ड आउट हो So जाता है, you're saying उसकी this वजह से भी अपनी trauma, sorry to cut you off, this trauma that is sitting behind, just making things easier for the people to understand, ठीक है? बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो ट्रॉमा है वो बेसिकली आप कह रहे हैं कॉग्निटिव स्ट्रेस, राइट? बेसिकली उसके बारे में आप बात करें कि एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, इट sort of reappears again and again. Is that what you're saying? Okay, exactly, yes, perfect. yes, it Yeah, move on. reappears. Yeah, तो move. जो हम लोग देखते हैं ना, सिर्फ यहाँ पेट पे मोटापा, ज्यादातर लाइक लोग पतले होते हैं, उनके बाजू और उनके Yep. सब कुछ पतला होता है, इवन टांगे, लेकिन यहाँ पर बेली फैट होता है, और बेली फैट इज द हार्डेस्ट टू गेट रिड ऑफ, मोस्टली बिकॉज इट्स स्ट्रेस Oh, जस्ट इन योर बेली एंड सप्रेशन, जो आप नम आउट कर रहे हो सारी फीलिंग्स, जो अपना भाग रहे हो, अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो,
मेंटली भाग रहे हो ना, उनको जो दबा रहे हो वो अपनी यहाँ पर रख रहे हो अपने पेट में, और स्ट्रेस में जब खाते हो आप तो उल्टा वो जाके बेली फैट बनता है. तो So very interesting how mind, like you stress you're eating, and that's not actually benefiting you and rather causing you harm in the long run. एग्जैक्टली, एक्चुअली या दिस इज समथिंग आई वांट टू मेंशन कि खाना, कोई भी खाने की चीज आप उठा लो ना, ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है. आप जिस हालत में खा रहे होते हो, आप जो उस चीज के बारे में सोच रहे होते हो, जो एटीट्यूड आप टेबल पे लाते हो, वो Yep. डिटरमिन करता है कि वो आपको बेनिफिट करेगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा. अगर मैं सेब भी बुरे उसमें खा रही हूँ कि मुझे जबरदस्ती खाना पड़ रहा है हेल्थ के लिए, अच्छा मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन आई हैव टू ईट इट, और या मैं स्ट्रेस में खा रही हूँ, तो मुझे फायदा नहीं पहुंचाएगा सेब, इसलिए मुझे लगता है तो बड़े कहते थे कि उल्टा खुश होके नुकसान खाना खाओ. पहुंचाएगा. बल्कि मेरे पे, हाँ, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, द रीजन इट बिकम्स फैट इज बिकॉज हमारी डाइजेशन ना स्ट्रेस में बंद हो जाती है. Oh. आप जब जब आप स्ट्रेस में होते हो तो एक तरीके से आपके दिमाग को लग रहा होता है कि ना आगे से ना ट्रक आ रहा है मेरी तरफ, या एक ना जानवर आ रहा है बड़ा सा, लाइक लायन या बेयर, और मुझे उससे बचना है, मुझे उससे लड़ना है या Heightened उससे senses भागना है. आप कह रहे हो उसके लिए basically. मुझे एनर्जी चाहिए. हाँ, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए. तो स्ट्रेस इन इटसेल्फ इज नॉट बैड. मतलब स्ट्रेस आपको एक सर्वाइवल के लिए आता है. Hmm. आपको वो बहुत चीजों से बचाता है, आपको जिंदगी में, लाइक हाउ टू स्टे अलाइव, उसकी वजह से स्ट्रेस हमें होता है. तो वो एक, इट्स अ गुड थिंग, स्ट्रेस इज अ गुड थिंग. Yes. लाइक वो सिचुएशनल जब होता है ना, जब वो ठीक होता है कि अच्छा हाँ अब मुझे शेर से भागना है या बच किसी ना किसी तरीके से ना, तो वो एक तरीके से यू आर नॉट थिंकिंग राइट. मतलब आपका आपका वो जो फ्रंटल लोब होता है, that shuts off and your digestion shuts off, क्योंकि आपके मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है. सारा ब्लड rushes to your muscles, into your legs, so you can run or you can fight, you know. Oh. um So yeah, you're in तो survival इस, mode. yeah, you're in survival mode. तो इस वजह से हमारी लेग्स शेक होने लग जाती हैं जब समथिंग हैपेंस, और व्हेन वी हियर बैड न्यूज एकदम से हमारी टांगें कांपने लग जाती हैं, या तो हम रोलर कोस्टर में बैठे होते हैं, क्योंकि दैट्स बिकॉज यहाँ जब गिरने वाले भी होते हैं, कुछ भी लाइक मोमेंटरी स्ट्रेस होता है ना, उससे हम एकदम से कांबा छूटता है, आफ्टर इट्स गॉन, वो सिचुएशन चली जाती है ना, उसके बाद हम शेक करने लग जाते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल द एनर्जी circulating in your muscles, Adrenaline or everything. and it's trying to get rid of the stress. Okay. शेक करने से आपका स्ट्रेस जाता है. तो that's wonderful. मैं एक्चुअली ये टेक्निक आपको बाद में बताऊंगी एंड में कि डे टू डे लाइफ में लोग क्या कर सकते हैं अपने आप का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए. Go ahead. We बट come गोइंग back to बैक टू द that. पॉइंट, या सिचुएशनल स्ट्रेस इज गुड, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हम वही स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है. यही Oh. सोच कि अच्छा मेरा घर, my house is burning down, ठीक है, that is a situational stress. लेकिन जो वो एक chronic लोगों को जो जैसे panic attacks वगैरह आता है, anxiety attacks आता है, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर एक टोस्ट भी बर्न होने लग जाए ना, और वो स्मोक आने लग जाए टोस्टर में से, that will trigger the response कि पूरा घर burn down हो रहा है and I need to survive. Oh. So ठीक है. body reacts to that and Yeah, so it's like okay. an ingrained, like एक तरीके से वो एक habitual चीज बन गई होती है, या एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी Yep. का, एक अलार्म सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी में. तो Exactly. अभी लाइक हाँ, कोई कोई आग नहीं है कहीं, कहीं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दिमाग में हम लोग जो पिक्चर्स बना रहे होते हैं वो इतनी ऐसे खतरनाक होती है. अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कोई गाली दे दी, इतना ज्यादा हम ऑफेंडेड अगर हो गए हैं, इतना ज्यादा हम डिफेंसिव हो रहे हैं, कुछ हमारे एक अंदर से ट्रिगर हो गया ना, इट्स रिमाइंडिंग अस कि दिस इज डेंजरस, दिस इज पेनफुल, आई नीड टू, इवन दो कोई पेनफुल
इतनी ज्यादा dangerous situation It's नहीं है, not a real लेकिन हम उसके emergency, साथ but the body reacts to it's it not an like that. emergency, but हाँ, we're dealing with it like it's an emergency. और वो Okay. हम लोग खुद भी जानबूझ के नहीं कर रहे होते, it's an automatic response. ये Okay. हमारे अंदर बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है. इवन जैसे अगर ट्रक हमारे सामने से आ रहा हो, तो आप सोचने से पहले, बल्कि उसको देखने से पहले ही आपकी बॉडी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी कि Yes. वी नीड टू यू जंप आउट. एकदम से Yep. वो जो एक सेकंड में हम लोग एक्शंस लेते हैं ना, जो वो सोच के नहीं लेते कि अच्छा अब मैं क्या करूं बचने के लिए, नहीं. योर बॉडी रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली. दैट्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स. Perfect. अगर Perfect. स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं हो तो हम वहीं खड़े रह जाए, मर जाए. ऐसा भी होता है, सम पीपल फ्रीज. Yep. ऐसे ओवरवेल्म Fight or सिचुएशन में flight. कोई लोग फ्रीज हो जाते हैं. हाँ, फाइट Yep. फ्लाइट और फ्रीज. Okay. या दैट्स द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. तो Okay. Yeah. So I या have another सो question to add to it. I'm sorry. I'm sorry to cut you off again. I'm doing a lot of that today because I have a lot of questions because this is so important topic, so दैट्स गुड. important आई एम topic. ग्लैड. कीप इट कमिंग. Yeah. So our diet today, yeah, all over the world, especially in Pakistan, increasingly fast food. Okay, I'll be coming to that, right? Fast food, very meat indulging diet. Okay, and dopamine, yeah, dopamine rush. So I've been vegan for some time, and वाओ. I've seen some of those documentaries, Earth Earthling. There were others as well. So they've shown this concept that when we eat meat, yeah, and which is very prevalent, meat and a lot of these animal related products, right? So they give you a sugar spike, yeah, and you get this dopamine rush, right? And this sugar spike you get, so according to those documentaries, that gives you a feeling of energy at the very moment, ठीक है? उस वक्त आप full charge up हो जाते हैं, ठीक है? But at the same time, your body starts working very hard, yeah, to like get rid of thing. This is something I've learned. You may correct me if I'm wrong, right? So after that, this sugar spike ends, and you go all lazy, and you want to eat again, right? Because that sugar spike has ended, yeah. On the other hand, if you're eating vegetables and greens, yep, they digest very slowly. So the sugar spike is, it's not very steep, it's very slow and steady. जिस तरह हमारे हमारे कहा जाता है कि शाम को सब्जी ना खाएं. Like they say कि greens, don't eat greens at night because they take time to digest, and if you go to sleep or इस तरह करके. I don't know if it's true or what, but that is what it is, right? So वो कहते हैं कि vegetables don't go like that, and that is why they're better for health than this meat and dairy products, right? So मेरा सवाल ये है कि is the change of diet somehow connected to how there is a very heightened stress and very prevalence of stress in our society, in Pakistan and the world as a whole? ओह डेफिनेटली. तो मैंने जैसे बोला था, दो चीजें. एक तो ये कि स्ट्रेस में बंदा ज्यादा खाता है, एंड दे सीक आउट फूड्स लाइक दैट. और जिसको मैं ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह है, वो समझ सकेगा ये बात जो मैं कहने जा रही हूँ, कि यू फील आउट ऑफ कंट्रोल. तो जो चीजें आपने अपने आप को बोली हुई है कि नहीं मैंने नहीं खानी, वो ही आप सीक आउट करोगे, वो ही चीजें खाओगे आउट ऑफ कंट्रोल पे. तो आई अवॉइड मीट एज वेल. Everything like meat, chicken, fish, वगैरह, eggs, because as you said, क्योंकि animal in जो ये जैसे पूरा process करा जाता है, it's stressful for the animals. तो उनकी bodies में इतना stress hormones भरे होते हैं, क्योंकि they're going through so many different things. Yep. Just for us to have their meat. So Corporate because farming they're and so everything. stressed out, yeah, we're kind of like eating that stress. Oh, What goes around comes around. So if we're thinking as humans, हम लोग
animals को ऐसे क्या कहते हैं enslave कर लें या जो भी कर लें. This is a big topic for another podcast. Another podcast Lekin for I just this. want to Yeah. mention the stress part of it. Yep. Animals are stressed out Okay. because of the way we're treating them. Okay. We're not treating them well, and therefore the stress comes around. आप इसको सिर्फ physically नहीं मेरी बात को लो, spiritually भी ले लो कि Yep. how can you think कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, What right? goes around लेकिन comes around. yeah, what goes around comes around. तो हाँ, हम लोग बुरा नहीं चाहते किसी के साथ करना, उनका like बहुत दफा हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, because we're living very unconsciously ना. Yep. So the whole point of this podcast is becoming aware, सिर्फ Yep. अपने से aware नहीं कि हमारे That's why you're here. actions That's से why you're here. consequence क्या, हाँ, हमारे actions से consequences क्या हो रहे हैं, like हमारे action से दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है, सिर्फ इंसानों पे नहीं लेकिन चीजों पे, जानवरों पे, even like worldly resources, हम बहुत ज़्यादा, we're like greedy, we're just like being greedy. Yeah. So that's what keeps us in this circle of I need more, I don't have more, I need more, I don't have more. And you know, it keeps us in that lack कि मेरे पास काफी नहीं है, मैं काफी नहीं हूँ, मेरे पास Yep. काफी नहीं है. तो that's the thing. This relates to stress so much because constantly we're working to make money, working to get somewhere in life. Also, we could find that I have enough. Now I finally have enough. Like if we just realize, okay, wait a second. Abhi, I have enough. So, wo stress chala jayega uska, that need to have something in the future, whether that's a body or house or a relationship, you know, when we're trying to run after something, we're staying in that stress response. कि मेरे पास नहीं है मुझे, like, you know. Again, like, Yeah. there's so many directions we can go with this conversation. So But my you, point, I'm sorry to cut you off again. I'm doing a lot that today. But yeah, that's okay. I was just reminded, आपने जिस तरह बात किया है ना, तो मुझे आपकी जो शुरू वाली बात याद आई है, जो आपने कहा था पाकिस्तान में फूड एडिक्शन होती है, ठीक? So, like you just talked about how we always complaining we don't have enough and we want more and everything, right? So basically, I want to bring it to the problem at hand, which is food, right? Like we because food addiction, it leads to especially with the junk food that's on the rise, yes. So how that leads to dopamine, right? And उसका थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि किस तरह how fast food and stress are related, like how we eating Yep. fast food. Yep. Yep. And like if you see kids these days, you take them to McDonald's and a sad kid, like he or she becomes instantly very happy, right? Oh, That yes. that It hijacks your brain. exactly. Fast food, ये जो मीट, मैंने जो बोला है ना कि कोई भी आप नेचुरल चीज उठा के देख लो, उसमें फैट और शुगर का एक साथ वो नहीं होगा, सिर्फ अनलेस आप कोकोनट्स ले लो या एक दो चीजें हैं नेचर में जिनमें वही कॉम्बिनेशन है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क में होता है, ठीक है? मदर के ब्रेस्ट मिल्क में जो कॉम्बिनेशन होता है फैट एंड शुगर का, दैट इज अ हाईली एडिक्टिव कॉम्बिनेशन, and that isn't found in nature. It's mostly found in fast food और जो humans ने अपने बनाई हुई चीजों में ना वो combination डाल दिया है because they know this is gonna get them addicted. So it's like sends signal to your brain. It alters your chemicals in the brain. It hijacks your brain basically. So it's there's something called in the food industry bliss point.
right Okay. amount of crunch, right amount of salt and sweetness to create that psychological control, basically, or Yeah, um, that keeps well, you that psychosomatic keeps you control more. going back to them, right? Yeah, It's that's yeah, it kept keeps you going back to that. It keeps you that's going kept back to that, McDonald's alive after so long, and and yeah, and yeah, it keeps you out of control. कि फिर लोग अपने आप को blame करते हैं कि मेरे से छुट नहीं रही ये चीजें. I don't know why I'm so like, why do I keep going back to yeah. that? एक तो um, stress can be caused by external factors, but a lot of times जो अंदर stress होता है ना, that is leading you to Okay, more, to seeking out more stress so it's a from the two-way street. outside as well. It's a two-way street. Yeah, it's, as I said, that cycle. Yep. That cycle. It's like what you're putting out there is what you're getting back. So, for example, um, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो ओवरवेट थी, शी डिडंट वांट टू बी, उसका ज्यादातर बेली फैट था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइक पूरी जिंदगी से ठीक थी, ये शादी के 2 साल बाद क्या हो गया मुझे, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा. और मैंने अब सब कुछ करके देख लिया, डाइट और ये सारा कुछ, लेकिन यू नो आई कैंट स्टिक विद इट और मेरा हो नहीं रहा. तो व्हेन आई डिड when we had a session, तो हमें ये figure out हुआ कि उसका जो husband है, अब तो उससे उसने divorce ले ली, लेकिन he was very controlling, he was very obsessive, और ज्यादातर उसका focus उसके physical appearance में था. Oh, तो so हाँ, तो अभी भी even after divorce वो उसका पीछा नहीं छोड़ा. वो मतलब एक तरीके से he keeps spying on her, he wants to keep having that emotional control over her, क्योंकि mostly he just wanted her for sex and you know her physical appearance. उसको वो emotionally नहीं ना connect करता था, उससे physically ज्यादा करता था. तो अब उससे उसको पीछा छुड़ाना है, तो in her mind, because your mind's job is to keep you yeah, safe, protect you, and avoid pain, right? yep. That's its number one job. तो फिर mind ने खुद ब खुद क्या करा कि if I look ugly, तो ये मेरा पीछा छोड़ देगा, ठीक है, because he Oh, wants me for my body. so the body, If I there's look a ugly, protective yeah, mechanism. Okay, yeah. So that's interesting. the protective mechanism. Your weight, उसका जो मोटापा था, वो उसको एक तरीके से protect कर रहा था, वो manipulation से, वो control से, वो toxicity से, जो दूसरा बंदे के साथ उसको खैर. तो फिर वो she was like, पहले मेरी डाइट सारी अच्छी थी, अब पता नहीं मुझे सॉल्टी चीजों से क्यों इतना ज्यादा लगाव हो गया, मैं क्यों इतना ज्यादा जाके चिप्स खरीद खरीद के लाती हूँ, क्यों इतना खाती हूँ, मेरे से क्यों नहीं जिम जाया जाता. बिकॉज योर माइंड, उसका जो अंदर जो माइंड है ना, वो इट्स लाइक दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड. Yep. इट्स लाइक, अगर देखो, chips is the fastest way to gain weight, to make you look ugly in order to protect you. So let's crave chips. I'm Yeah. gonna make you eat chips. So her So whole then, body is actually working in a unison to protect her from the yeah, emotional trauma that she's going through. yeah. So that's a तो वो great point, cravings कहाँ actually. से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, अब समझ आ रहा है, right? कि Yeah, yeah, you know, yeah. जैसे होता है ना कि एक दफा कोई स्मोक करेगा, उसको समझ नहीं आएगी, वो छोड़ देगा, एक करेगा वो एडिक्ट हो जाएगा. वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिगरेट ही ऐसी चीज है कि वो इतनी एडिक्टिव है, but also because something's going on inside here as well that's making you addicted to something, right? Yeah, that's um some, these are very you're interesting points constantly you're making. seeking something. Yeah, yeah, you're seeking comfort, or like you're seeking numbingness or whatever else. तो फिर वो, also going back to that lady's story, um अच्छा ये समझ आ गया कि मैं क्यों खा रही हूँ इतने चिप्स, लेकिन मैं जिम क्यों नहीं मेरे से जाया जा रहा. Well, obviously if you go to the gym you're gonna look pretty, and if you look pretty then you're gonna Yeah. be unsafe, right? Interesting, interesting. So So yeah, so exactly that's where we started, right? Okay, physical itself is not mind, yeah, important, what's going and on in your mind, mind? it's both are equally important to take care of.
And Mhm. with that, I guess we'll come to some basic questions so that we can help people out here. Um, for example, this is going to be very theoretical sort of questions which can actually raise awareness in a sort of way that people find them very helpful. For example, uh, we've talked about how stress can show up in our body, like the example you gave, right? And we talked about how eating disorders, right? They're a part of stress. Okay, and what else can be how else can this stress show up in a person? कैसे पता लगेगा Oh, कैसे सामने आता है स्ट्रेस so किस many फॉर्म में? things. So many things. Stress can show up as आपसे रात को सोया नहीं जाता, constantly आपका दिमाग अगर एक्टिव है, you're not able to sleep, और अगर एक्टिव नहीं भी है फिर भी insomnia, बहुत सारी चीजें, apnea या sleeping disorders आ रहे हैं, या तो concentration problems, you're not able to focus in school, you're not able to focus at work, आप like in and out, or zoning out constantly. Another indication of stress. And और भी बहुत सारे हैं, heart disease, um, Heart disease, that is yeah, interesting. heart disease, even again, आपके symptoms depend on acute stress है या chronic stress है. Acute stress होता है जो situational होता है, जैसे हमने पूरी बात करी है कि Yeah, वो वक्ती आता है, survival वक्ती mode. तौर पे आपका Yeah. एक आप वो हाइपर हुए हुए होते हो उस सिचुएशन से डील करने के लिए, वो चला जाता है, तो उसके उसके बाद आपको थोड़ा सा हो सकता है थकावट हो, वो आप जो भी हो, अगर एक्सीडेंट हुआ हो, whatever you went through, आर्ग्यूमेंट हुई हो पार्टनर के साथ, उसके बाद आप थोड़ा सा लाइक उसके अलग इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके अलग सिम्टम्स होंगे, लेकिन जो क्रॉनिक होता है वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, जैसे अभी हार्ट डिजीज, इवन कैंसर, diabetes, when, yeah, anything Diabetes, yeah, that, that yeah, has a very even direct rashes, relationship. Yeah. yeah, acne, Oh, hair loss, so many uh, things, फिर वो these are some स्ट्रेस of the आके many आपके prevalent relationships में भी, problems जो कि आजकल की हमारी hmm? generation में है. I, I I want to ask you this question, which is very important. जो कि मतलब कि it's a lot of I've heard this argument a lot. People say अब इसमें दो two sides हैं, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि our generation which is like the young population, ठीक है, we're more stressed than usual, yeah, than older generations. And then Mm, there is this point that no, we're not more stressed, we're more outspoken about it, right? yeah. Previous generations learned or they chose to deal with it or suppress it, as we've discussed, right? So Mm. do you think in your professional opinion that over times, like personally I believe that stress has increased, ठीक है, क्योंकि our form of life is very different. Gen Z जो More हम लोग हैं, fast paced, it या has very become very fast fast paced, paced, so much unemployment, या stimulation, yeah. पूरी दुनिया में हमारी जनरेशन जो है लाइक 1996 के बाद वाली, लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और मतलब कि a lot of problems in social lives as well, ठीक है, Mhm. उसके बाद and adding to that we're more outspoken as well. So I believe that, am I right, or am I going in a wrong direction there? No, 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 you're what you're saying is perfectly on point, because both things are happening. एक तो जैसे अब लाइफस्टाइल बन गया है सबका, और बच्चे भी जैसे फोन पे अब काफी Hmm. अर्ली एज से लग जाते हैं, ओवर स्टिम्युलेशन Yep. creates overwhelm in the body and everything constantly, like, but at the same time there's a turning point happening, Yep. like it's like an amazing age that we're living in, because everything is going on all at once right Yep. now. So we can't put like a label on it कि नहीं ऐसा है ऐसा नहीं है, but you are right about newer generations being more outspoken, वो अपने आप को express करती हैं ज़्यादा, और
उनके पास ज्यादा वो लाइक resources. जरिए भी हैं Yeah, एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को। yeah. एक तरीके से ये भी हो रहा है और साथ साथ में ये भी हो रहा है कि if they don't learn how to manage the incoming stimulation, they can become stressed. लेकिन I ये सही बात है कि पहले भी होता था, बच्चों को स्ट्रेस होता था, जो अब के जो मतलब अब हमारे दादा दादी नाना नानी ऐसे कहते हैं ना कि हमको तो कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, अब भी नहीं होता। इवन दो उनको सबसे ज्यादा हो रहा होता है, they're constantly thinking so negatively in their head, overthinking over analyzing everything, लेकिन they're like मैं तो नहीं so स्ट्रेस लेती। but even बचपन में भी stress is anything, um, any experience that overwhelms you, या yep. तो मतलब एक तरीके से और बहुत सारे ऐसे situations बच्चों की लाइफ में आते हैं जिसमें वो emotionally neglected होते हैं, that is a stress, right, I that turns into chronic. इसमें मेरा एक एडिशन है थोड़ा सा, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ कि is stress increasing over time also because we've become a more reward based society? More what based society? Rewards based society. We want, Rewards. yep, we want rewards out of everything, right? For example, No, I think that's been going on for a long time. okay, okay, Yeah, I think interesting. yeah, that's been going on for a long time. लेकिन अब जो मैं सिखाती हूँ पेरेंट्स को करना वो ये है कि move away from the rewards and punishment Yep, and move towards connection and yep, bonding, क्योंकि हम बच्चों को पहले तो जैसे माँ बाप ना क्रिटिसाइज करके सिखाते थे ना कि तुम्हारे साथ ये गलत है तो इस गलती को सुधारो, अगर yep. मैं तुम्हारी गलती तुम्हें ना बताऊं तो तुम्हें नहीं पता चलेगा और तुम उसको सुधार नहीं पाओगे। Yep. लेकिन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उससे उनकी वो टेम्परेरी वो हो सकता है गलती सुधार दें, लेकिन उनके अंदर एक वो नेगेटिव सेल्फ इमेज Basically, बैठ जाती है। what you're saying is positive reinforcement करनी चाहिए rather than negative reinforcements. Yeah, in a way, like again, like let's do another podcast on this, like parenting, because as I mentioned, this is a really important thing कि अगर माँ बाप को ये समझ Yeah, आ so जाए कि so उनका impact कितना we've ज्यादा है got बच्चे पे। 3 podcasts coming up. One is meat and stress. Yes, parents and stress. And yeah, and Yeah, stress in parent-child yeah, relationship. Yeah, yeah. There are like a lot of subtopics in this. Yeah. a lot of talk. Yeah, a lot of talk. So okay, let's move towards the end of this podcast. And at the end of the day, I'd like you to, as you said yourself, कि we've discussed कि क्या होता है, किस तरह होता है, क्या चीज़ें cause करती हैं. But at the end of a day, the everything should be like leading to solutions, right? We don't just want to Mm, pinpoint कि इस बंदे को stressed है, ठीक है? हमें पता लग गया कि अगर for like essentially what we've realized is that having a mental health coach is as important as having a fitness coach in this life, right? mm, That has been established. But for example, हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए जो like there's still stigma attached to it, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है they'd rather do something at home rather than going to a clinic or contacting the professional person, right? So like for example, there are so many instances जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, ठीक है? Dependents होते हैं, mm. और so many cases. So what are some of the tips and some of the ways that कोई बंदा for example घर पे बैठा हुआ है, वो stress को How they कैसे can deal with, yeah. yeah, जैसे meditations or something, anything you can recommend? Yeah. So I know a lot of people don't understand what meditation is. लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ अगर आप गहरे सांस ही ले लेते हो ना रोजाना सुबह उठ के सोने से पहले, तो that has the capacity to change your overall mood throughout the day and your ability to deal with things that are coming in. So stop blaming the outside, first of all.
एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम करना छोड़ दें कि इस बंदे ने मुझे स्ट्रेस दिया है, ये बंदा मुझे मेरा भी. It's about how you deal with it, right? Responsibility means how you respond to something. Exactly. तो Literally. कुछ भी हो रहा हो आपकी जिंदगी में, अगर किसी भी चीज से आप डील कर रहे हो, परेशानी हो, just take deep breaths in through your nose into your belly, diaphragm में. क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा ये सांस तो हम रोज ही लेते हैं, ऑब्वियसली इससे क्या होना है सांस लेके, लेकिन mindful breathing is something else. It has it again वही जो अपनी फिजिकल आप अपने उसको बदलोगे ना, अंदर से नर्वस सिस्टम को कॉम करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा. क्योंकि एक तरीके से अगर आप पैनिक स्टेट में है जिसम, उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर तो बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो आप ना तो सही सोच पा रहे हो, ना सही फैसले ले पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, आप एक बहुत ज्यादा लाइक उसमें हो, Basically what you're saying is कि आपको अपने बुरी fight हालत or में. flight mode से exit करना चाहिए. हाँ, उसको एग्जिट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टेकिंग डीप ब्रेथ्स. Okay. और मैं अभी एक तरीका बताती हूँ कि क्योंकि ब्रीदिंग के भी डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं ना. Go ahead. मैं एक बताती हूँ अभी, लेकिन let me just complete my point. Yeah. कि अगर आप फिजिकल रिस्पॉन्स को बदल लो तो खुद ब खुद आपका माइंड starts to relax as well, right? Because mind and body is the same thing, essentially one thing. So it's kind of like tricking your mind into believing that there's no emergency. So when you're taking deep breaths, you're slowing down your nervous system, you're slowing down your heart rate. जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है ना, माइंड को लगता है अच्छा अगर बॉडी रिलैक्स है इसका मतलब है there is no need to fight or run or like, तो अगर मतलब कोई वजह ही है कि आराम से ये बंदा बैठा हुआ है क्योंकि कोई चीज ऐसी कोई डेंजरस सिचुएशन है नहीं. तो माइंड बिलीव्स कि अच्छा if I'm relaxing that means there's no need to panic. You know. तो फिर आप अपनी बॉडी से स्टार्ट करो. यू कैन इवन शेक, जैसे पहले मैंने आई थिंक मेंशन करा था कि शेकिंग रियली हेल्प्स. इवन जब बेबीज होते हैं उनको हम रॉक करते हैं because it helps them calm down, it helps to sleep. थोड़ा सा उनको हम पैटिंग करते हैं because it shake, it vibrates the body a little bit. तो do that for yourself. आप अपने हाथों को पैरों को यूं ना just shake it out and take deep breaths, like relax your body in order to relax your mind. Okay, so this is yeah, so a really big thing. So join a Zumba class. That's what you're saying. You can, like, I mean वो तो एक आप कर सकते I हो, was kidding. लेकिन रोजाना के उसमें जैसे आपने बोला ना घर बैठे आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आसान भी हो और फास्ट भी हो, और you know it's free. Yeah, it's free. Yeah, it's free and is the best method, I would say. Also 4 seconds के लिए आप अंदर खींचो. This is the technique I was talking about, the square technique it's called. 4 seconds के लिए आप अंदर खींचते हो, 4 seconds के लिए अंदर रखते हो अपनी सांस को, फिर 4 seconds के लिए आप बाहर निकालते हो और फिर 4 seconds के लिए बाहर ही रखते हो. And then you do that a few times, जैसे 3 to 7 times. ठीक है, until you start to feel your body relaxing. I did that. So that's my, उसमें फिर आप एक तरीके से consciously mindfully एक चीज को कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि जब बंदा थोड़ा पैनिक स्टेट में होता है, उसको एंजाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, तो उसकी सांस भी बहुत लाइक फास्ट होती है. इट्स लाइक स्लो शैलो ब्रीदिंग, लाइक कुछ ऐसे ना छोटे छोटे सांस ले रहा होता है बंदा, तो वो उसको पैनिक मोड में रखता है. लेकिन जैसे you take deep breaths, your mind thinks okay there's nothing to worry about, it's all good, and you start to relax. Yeah. Okay, that's amazing.
Mm. I guess that's a wrap for today. Mm. Oh, Thank let me just mention one last thing, because Okay. I don't want people to get confused on this. um, एक होता है ना रोजमर्रा का स्ट्रेस जो अपने आप से खुद ही बंदा कर सकता है, जैसे ब्रीदिंग से अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेता है, लेकिन एक होता है जो जैसे क्रॉनिक होता है, जो पीछे एक आपकी प्रॉब्लम चली आ रही होती है, जैसे एक्चुअल पैनिक अटैक्स अगर किसी को आ रहा है, तो वो उसके लिए आपको ऑब्वियसली हेल्प की Obviously, जरूरत है. You that's need the to whole seek point. therapy because breathing Yeah. just breathing won't help. बहुत सारी सिचुएशन में breathing will help. कोई Yep. आपको ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा आ रहा है आपको, आप गहरे सांस लो, you will calm down. लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं where you're not able to handle yourself, so So that's where I would recommend कि do seek out therapy. मैं ये कहूँगा इधर कि deep breathing is like a band-aid, ठीक है, और it will temporarily help you in small scratches and something. But if you got big problems like chronic stress and others, please seek out help. And before, thank you so much, Hiba. And before we end this, I'd like to actually mention Hiba's has her own Instagram page, I believe, right? She does these small videos, and she helps people out, a lot of people. And check out her page. I'll link it in the description as well. But it's Heal and Integrate at the rate of HEALANDINTEGRATE. Heal and Integrate. So thank you so much, Hiba, for giving us this time. And we learned a lot today about mental health, और हमने सीखा कि वाकई आज के मेरे जो टेक अवेज हैं वो ये हैं कि कोई मेंटल हेल्थ जो है इट इज़ अ प्रॉब्लम लाइक द फिजिकल बॉडी, और खाली ये उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ लिंक टू फिजिकल बॉडी. और जिस तरह हमने कहा कि इट हैज़ एक्चुअल रेमिफिकेशंस इन योर लाइफ, ठीक है. जिस तरह द एग्जांपल यू गेव, और जिस तरह हमने बात की कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं स्ट्रेस से, स्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर्स करता है, और like so many other examples, or chronic stress है, there's so many problems, और it is about time कि हम लोग इसका स्टिग्मा हटाएं and people actually seek professional help, ठीक है. You won't just, Yeah. yeah. So thank you so much. And change is occurring really fast in Pakistan, I would say. Like, Inshallah, inshallah, Alhamdulillah, inshallah. Pakistan piche nahi hai, but in some things, Yep. we just need a bit more education and also um, Yeah. resources Hiba, for sorry people to to. I forgot to tell you this, but there's this point that I'm going to make it a point in my podcast from now on. I did it in my previous podcast as well कि मैं ना गेस्ट से पूछता हूँ कि एक किताब बता दें जो आप रिकमेंड करेंगे रीडर्स को कि वो पढ़े. तो कोई भी अपने टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई आपने रिसेंट कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जो आपको लगा हो कि भाई ये दिस शुड बी रेड बाय लॉट ऑफ पीपल, तो कोई ऐसी किताब मेंशन कर दें. Um, okay, so मैं उर्दू में नहीं पढ़ती किताबें, इंग्लिश में है मेरे पास. It's okay. I have so many, but yeah, that depends what topic you want to relate to. लेकिन अब तो इतने सारे आ गई. The Power of Now. There's also एक बहुत अच्छी थी, उसका नाम नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन मैं आपको बताऊंगी. You can put it in your description. Yeah, okay. एक I मिनट, हो सकता है मेरे फोन पे हो. मेरे पास एक book है, like I don't know if you've read it. It's called Thinking Fast and Slow. It is an amazing book on decision making, and I believe it's very relevant to stress as well. There's also another one, जो क्योंकि हम लोग बॉडी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, and how trauma and stress impacts your body. There's a one called what what everybody is saying. Okay, I'll link this in What the everybody description is saying. Yeah. for everyone to read. Thank you so much, Hiba, and thank you so much everyone for watching Let's Talk Pakistan. Please subscribe and share with your friends and family. And I hope we're coming up with very amazing content from now on, and Inshallah. we'll have amazing speakers here, and there is so much more that's going to happen on this podcast. So stay tuned,
and subscribe and like. Thank you and Allah Hafiz.